हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीपी सर्वर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। एंड अभी एआई एमएल के इंडस्ट्रीज में दिस इज बूमिंग एंड पीपल आर मेकिंग दीज एमसीपी सर्वर्स, दीज क्लाइंट सर्वर्स फॉर दीज एमसीपी सर्वर्स। सो ये सारा मार्केट में इतना बूम हो रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एमसीपी सर्वर्स होता क्या है एंड हाउ डज इट वर्क। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दैट इनिशियली व्हेन वी हैव एलएलएम, जब अपने पास एलएलएम्स वगैरह था, एलएलएम्स कैन डू वेरियस एक्टिविटीज लाइक एलएलएम्स इमेज जनरेशन करते थे, एलएलएम्स कोड जनरेशन करते थे, एलएलएम्स टेक्स्ट जनरेशन करते हैं, वीडियो जनरेशन करते हैं। दे कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट वन थिंग दे कांट डू इज एलएलएम्स कैन नॉट कनेक्ट टू अ टूल। मतलब इफ यू राइट सम prompt and while writing these prompt those commands will be executed into that tools, ये नहीं हो पाता था। ओके, सो फॉर दैट एंथ्रोपिक लास्ट ईयर के दिसंबर और नवंबर तक एंथ्रोपिक ने एक प्रोटोकॉल, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स लॉन्च किया। इट्स लाइक अ एपीआई फॉर एलएलएम्स। ओके, सो उसने एक सेट ऑफ रूल्स लॉन्च किया जिसमें बेसिकली दे हैव गिवन अ स्ट्रक्चर्ड वे हाउ एलएलएम्स कैन कनेक्ट विथ डिफरेंट टूल्स। Okay, so here you could see MCP is an open protocol that standardizes how application provide context to LLMs. Think of a MCP like a USB port for a AI application. The second part is MCP server is also used for connecting the AI models with different data sources and tools. Okay, moving on to understand कि MCP servers के आने से पहले क्या LLMs कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते। ओके, so MCP, these protocol, that model context protocol आने से पहले MCP can do image generation. Okay, MCP can do image generation, but they cannot post those images into your social media platform. They cannot edit that videos or images into your Photoshop. मतलब आप जनरली इमेज क्रिएट तो कर सकते थे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते थे कि आप प्रॉम्प्ट लिखो और वही सेम चीज का सारा एडिटिंग एंड एवरीथिंग विल बी डन इन द टूल. This can't be done. Okay, similarly आप code generation तो कर सकते हो. Let's suppose if you are writing some code in Python, you can generate that code. Okay, you can create a response, you can give a prompt and आप response के through code generate तो कर पाते थे, but वो कोड को आप किसी भी पर्टिकुलर टूल में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे. ओके, यू नीड टू कॉपी इट एंड देन पेस्ट इट देयर. ओके, so this is something which LLMs can do. Okay, LLMs cannot do a two-way communication. LLMs कभी भी किसी भी कोड बेस, किसी भी टूल्स के साथ, किसी भी डेटाबेस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता था. यू नीड टू गिव अ प्रॉम्प्ट, इट विल क्रिएट अ क्वेरी और अ कोड फॉर यू. That is what LLMs do. LLMs can't do. LLMs two-way connectivity नहीं कर सकते थे tools से और LLM से. Like हमने यहाँ कुछ prompt लिखा, that can be executed in some tool. ऐसा नहीं हो सकता था. LLMs cannot do the text generation based on the latest info. Let's suppose कि मुझे किसी ने बोला कि मुझे आज का स्टॉक प्राइस चाहिए किसी पर्टिकुलर कंपनी का, जैसे मुझे एसीसी सीमेंट का आज का स्टॉक प्राइस चाहिए. इट कैन नॉट गो टू द इंटरनेट एंड गेट द लेटेस्ट डेटा. दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ओके, सो LLMs ये नहीं कर सकते बिकॉज LLMs आर प्री ट्रेन्ड मॉडल, आर लार्जली ट्रेन्ड मॉडल्स एंड इनका ट्रेनिंग इतना कॉस्टलियर होता है कि आप इसको हर टाइम पे, हर एक महीने 2 महीने में ट्रेन नहीं कर सकते, या हर एक दिन 2 दिन में ट्रेन नहीं कर सकते. इट विल टेक 6 months ऑफ टाइम और 1 year ऑफ स्पैन टाइम, और बेस्ड ऑन दैट LLMs ट्रेन होते हैं. कोड जनरेशन तो होता था, बट वी कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट कोड इनटू अ टूल. When we have these problems, there is a protocol. Anthropic ने एक protocol launch किया, that is called MCP servers. Now आपको मोटा मोटा बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि MCP protocols होते क्या है and how these are going to work. Let's suppose आप समझ लीजिए कि MCP protocols are some APIs. Okay, MCP protocols एक API है जो LLMs use कर रही है those API to do their things. Okay, and this is how a MCP server works. So here you could see MCP server have 5 different components, that is MCP host, MCP client, MCP servers, local data sources and remote services. Okay, so MCP host क्या है? Hosts are basically models. Okay, so what model we are using? We are using Claude,
या अपन ओपन एआई यूज कर रहे हैं, या अपन लामा यूज कर रहे हैं, या कर्सर का कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, अपन एलजी का कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, व्हाट मॉडल्स वी आर यूजिंग, ओके, या चैट जीपीटी का कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, ओके, सो दीज आर कॉल्ड एमसीपी होस्ट। बेसिकली ऐसे होस्ट जहां से बेसिकली दीज आर कॉल्ड एलएलएम्स, ओके। Second one we have MCP clients. MCP clients are used for connecting the connecting the MCP servers. Okay, so these are called clients. मतलब मैं एक client हूँ and I am using this because मैं एक client हूँ, I am using the Claude application as a client and I am using the Claude application to connect to that particular MCP server and वो MCP server different tools से या different data sources से connect कर रही है. This is what MCP client do. MCP servers are the actual code logic जहां पे हम लोग सारा कोड लिख रहे हैं, सारे आर्किटेक्चर, सारे टूल्स लिख रहे हैं कि what tools we want. लेट्स सपोज मुझे एक टूल चाहिए जिससे मैं लेटेस्ट डेटा सर्च कर सकूं वेब से, तो ये भी एक टूल हो गया. लेट्स सपोज मुझे एक टूल चाहिए टू कैलकुलेट अ प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अ सिंपल इंटरेस्ट. Okay, let's suppose मुझे एक tool चाहिए so that I can connect my LLM to a SQL server so that if I write a code into that particular LLM, it would be executed into that particular database. Okay, this is what we have. Okay, then we have local database. Local database are those tools, those external sources and services, basically APIs. So we want these APIs and मतलब हम लोग basically ये tools से ही और ये API से ही connect करते हैं. So आज के दिन में we do not have, let's suppose if someone is using Photoshop, okay, if you write some code and it is doing the Photoshop in the Photoshop tool, it means you will be able to do that, but right now we do not have those MCP servers. Okay, let's suppose someone will create those MCP servers और अगर Adobe Photoshop ने उस MCP servers को expose किया और हम लोग use कर पाए अपने LLM में, that could be a great thing. Okay, so this is what we have related to MCP server and general architecture MCP server का भी यही होता है कि एक Claude एक MCP servers को connect करता है और एक MCP server will connect to different tools or different external data sources. Okay, to understand more, let's suppose we need to generate a report showing the price, revenue and profit of the MRF tires and Apollo tires. So मुझे किसी ने बोला कि आप क्या करो, आप एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें प्राइस, रेवेन्यू और प्रॉफिट हो एमआरएफ और अपोलो टायर का. मैं प्राइस और रेवेन्यू तो ये कर सकता हूं. मैं अगर मुझे समरी क्रिएट करनी है, आई कैन क्रिएट अ समरी, बट आई कैन नॉट क्रिएट द डेटा बेस्ड ऑन द लेटेस्ट. मतलब आज का दिन का डेटा मैं लेके डेटा वो रिपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकता बिकॉज एलएलएम्स आर नॉट ट्रेन्ड. एलएलएम्स उस दिन तक ट्रेन नहीं है. सपोज अगर मैं कल तक भी ट्रेन करूं एलएलएम को, पूरे एक दिन का गैप रहेगा एलएलएम के वो ट्रेन डेटा में. ओके, सो लेटेस्ट डेटा हमें कभी नहीं मिलेगा. सो लेट्स सपोज अगर मैं किसी एआई इंजीनियर को पूछूं कि व्हाट यू डू, यू मेक अ एलएलएम टूल वेयर हम लोगों को लेटेस्ट डेटा मिल जाए, सारे ये दोनों स्टॉक्स रिलेटेड और एक समरी हमें हमेशा मिलके, लेकिन इट शुड बी वन डे अर्लियर. मतलब आज का पूरा डेटा कैप्चर होना चाहिए अगर कल का मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ. ओके, सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट. सो राइट नाउ let's suppose I need to do this particular comparative analysis. So first we have the executive summary and second we have the company profiles and market position. This is something we will create it using LLMs. Okay, we can create it using LLMs. Let's suppose I'm using LLM 4.0, Llama 4.0, and it will summarize the file, but it will not be able to fetch the executive summary. It is able to fetch the company's profile and marketing position, but it will not be able to fetch the latest detail. मतलब आज का प्राइस क्या है, स्टॉक प्राइस क्या था, या कितने पे क्लोजअप हुआ, ये हम लोग नहीं पता कर सकते. ओके, सो फॉर दैट व्हाट, लेट्स सपोज वी वांट दिस डेटा. ओके, जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या था, आज का परफॉर्मेंस क्या था, स्टॉक इन्फॉर्मेशन 52 वीक में क्या है, 52 वीक लो में क्या है, वोटिलिटी कितना है, 11% से ऊपर जा रहा है, 14% से ऊपर जा रहा है, या कंपनी प्रोफाइल कैसा है, ये सारी चीजें आज से रिलेटेड, मतलब आज के डेटा से रिलेटेड मुझे चाहिए. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो वी कैन नॉट डू इट. ओके, लामा समराइज तो कर पाएगा बट
we cannot get the latest file. Now the MCP protocols or MCP servers come into picture, where what they are doing, these LLMs or these large language model will do the summarize of file. But when it comes to fetching the data, fetching the latest data of that particular two stock, जैसे अपोलो और MRF टायर का मुझे लेटेस्ट स्टॉक परचेज करना है, for that what it will do, it will connect the MCP server. The MCP server will connect to internet, fetch the data from that particular internet and create this particular report. Okay, ये report create करेगा. So this is how MCP server works. Okay, so see how beneficial it is. Let's suppose initially MCP server का क्या होता था कि अगर मुझे एक LLMs को आप डेली ट्रेन नहीं कर सकते. ओके, बट अगर मेरे पास अगर मैं एक MCP सर्वर बना दूं, मुझे जहां से इट विल कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड गेट द लेटेस्ट डेटा, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा LLMs will summarize it. Okay, so this is how a MCP server work. Okay, now let me give you another example where we can use these MCP server. Let's suppose we have three companies. Let's suppose Yahoo is making a tool and calling a API. Basically they are writing on a code base जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग डिफरेंट LLM टूल को डिफरेंट API से, वेब सर्च से, बेसिकली ग्लू कोड का यूज करके या किसी भी ADF का यूज करके दे आर कनेक्टिंग दीज LLMs टू API कॉल कर रहे हैं, या वेब सर्च कर रहे हैं डेटाबेस से, या फाइल से कॉल कर रहे हैं. ओके, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. ओके, सिमिलरली द गूगल इज ऑल्सो डूइंग द सेम. वो API कॉल कर रहे हैं, सेम वेब सर्च का API कॉल कर रहे हैं, सेम डेटाबेस का API SQL सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं, और फाइल मूवमेंट के लिए वो कोड लिख रहे हैं जिसमें वो LLM से इंटरेक्ट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. माइक्रोसॉफ्ट भी वही कर रही है. when they are doing the same thing, different companies have different code for the same type of application. मतलब वेब सर्च करना है तो वो लोग एक पूरा कोड लिख रहे हैं. मुझे अगर फाइल मूवमेंट करना है, बेसिकली अगर मैं LLMs को बोलूँ कि फाइल मूवमेंट करो, तो वो पूरा एक कोड लिख रहा है. ओके, सो इफ दे आर डूइंग दिस थिंग, अगर इस LLM एंड दीज टूल्स एंड डेटाबेसेस के बीच में एक अनदर लेयर आ जाए, अनदर लेयर ऑफ MCP servers, and MCP servers will be common to all of these calls. Okay, so what they have to do, they have to just use the MCP servers. So they just have to use these MCP servers. Now there is an idea, like what is the idea behind this MCP servers? So पहला आइडिया तो यही था कि ट्रेनिंग, LLMs का ट्रेनिंग इज वेरी कॉस्टली. आप डेली ट्रेन नहीं कर सकते हो, और LLMs के पास लेटेस्ट डेटा नहीं होता. आज के स्टॉक का डेटा नहीं होगा, वेदर का डेटा नहीं होगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. Okay, LLMs cannot do a two-way communication. Okay, so for doing these things we have created these MCP servers. So आज के लिए I have explained these. Next video में I will create a simple MCP server. I will let you know that how I will be creating this MCP server and how I'm going to connect these MCP servers to a cloud application, and I'm going to use that. Okay, so thank you so much for that. If you really like my video, you please do subscribe and share this video with your friends. Okay, and I have tried to explain the MCP servers in a very lame language. Okay, hope you get it, and thank you so much.